Hi guys, I just wanted to talk about Palestine first, and we should not stop talking about Palestine. Please keep sharing posts on your social media, on your Instagram or whatever प्लेटफॉर्म यूर एक्टिव ऑन ट्विटर. अगर आपने बात करना छोड़ दी तो लोगों को लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और बस सब कुछ पीसफुल हो गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ. वी ऑल नो कि सिर्फ 4-5 दिन का सीज फायर हुआ था. उसके बाद दे स्टार्टेड अटैकिंग एंड बॉम्बिंग अगेन एंड दे किल्ड 1,000 people in the first 24 hours, which is मतलब very 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 मतलब कि you cannot even have the words how what level of cruelty this is when these people have nothing to do with it. We have also seen Joe Biden and Kamala saying that we support Israel, and you just मतलब कि I just it's just so unbelievable to me कि how you are just killing innocent people who do not deserve all of this, and they literally it's their target goal कि they want to like wipe people in Gaza off, or people are leaving and people are going to other areas, and it's just so heartbreaking, and it's just so cruel to see that they are supporting Israel and Israel is killing people without any reason, and you can't do anything at all because there's the people in power supporting it. So what we can do is that we can keep protesting, we can keep raising our voice if we stop talking about it. कि oh my god it's happening since so many days, तो अब मुझे पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने पोस्ट कर दिया था. तो it will just मतलब कि the only power, the only thing we have is our voice, and the only thing we can build pressure on them is by keep talking about it, keep boycotting things, keep boycotting the brands, keep boycotting the content that support it, and do not give any profit to those organizations at all. Be very meaningful with where you're spending your money. और a lot of people are like कि ओ मेरे खाने से क्या हो जाएगा, मेरे ये चीज़ लेने से क्या हो जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ता है. और you मतलब कि you have probably seen how McDonald's in Pakistan and KFC in Pakistan are struggling, and I actually still see a lot of people who are lined in front of McDonald's and KFC. So I just want to say that these things are very easily replaceable और कुछ ना कुछ मिल जाएगा. आप वैसे ही 4 वीडियोस देखें, आपका खाने का दिल ही नहीं चाहेगा. एंड मतलब कि it just would make you feel so angry, so you just do not want to or should not profit any organization or a human being that suppose genocide, right? So please follow the people who are in Palestine and they're supporting every single thing ever. Share their post, support pages that are giving information and educating people about how what Israel is doing with stuff, and keep sharing it. Even though that's the only thing we can do, it's not a small thing if we'll keep talking about it. अगर आपको 400 लोग भी आपके फॉलोअर्स हैं और वो आपकी स्टोरीज, उनमें से अगर 100 लोग भी आपकी स्टोरीज देख रहे हैं, तो दैट वुड मेक अ डिफरेंस, क्योंकि 100 लोगों को शायद कोई इन्फॉर्मेशन ना हो और वो देख के उनको पता लगे लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो कि सीज फायर उन्होंने ख़त्म कर दिया और द सीज फायर वॉज नॉट परमानेंट, इट वॉज टेम्परेरी, और उन्होंने वो बंद करके फिर से बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया. लॉट ऑफ पीपल डू नॉट न्यू दैट. तो इफ़ यू विल कीप शेयरिंग थिंग्स तो people would मतलब कि see you and they'll post it too, और इस तरह मतलब कि you can spread the word and spread things, or you can make people more alert. तो इस वजह से it does matter. और please just be mindful of whatever product you're consuming, because a lot of organizations um, fund genocide, and obviously we are not supporting that. मुझे लगता है कि obviously you can, there is a lot of pages and posts that are saying कि इस specific brand को boycott करना है, लेकिन obviously you can do, a lot of people do not believe it, so you can do your quick research too कि are they supporting ये or are they funding them, and you will just find out what they're doing, and it would be easier for you to make a decision. And right, that's it. That is what I want to say. What's up, guys? This is Abhida here, and you are listening to the Brown Girl Rants. How are you guys? How's life dealing you? I am all over the place. There's so much happening, but at the same time, there's
not really that much happening. I don't know how to explain it. Like, and we'll get into it later because that's really the premises of this podcast episode. Like, and let's just start by saying, "K, I told you guys in the last episode, K, I have a dholki at my home this Saturday. Because my friend is getting married, and I really wanted to do a dholki, or she's literally like the very first friend of mine who's getting married. और हमारे पूरे ग्रुप में पहली वाली शादी है तो एवरीवन इज़ रियली एक्साइटेड और इस वजह से हर वेडिंग इज़ रियली लाइक फील्स वेरी लॉन्ग क्योंकि a lot of us are doing ढोलकी और शी इज़ डूइंग ढोलकी और इट्स सो मच फन और अच्छा अब मेरा ये हुआ कि आई रियली वांटेड टू डू अ ढोलकी लेकिन आई हैव नो सच एक्सपीरियंस लाइक I do love hosting. Like at the same times, I am really bad with decor because I don't have a lot of things and I'm not creative and I do not have the skills. Creative तो शायद मैं हूँ लेकिन मेरे पास skills भी नहीं है और ना मेरे पास चीज़ें हैं. I was really stressed about the decor. हालांकि उसके पास मतलब she sent me all the stuff that is required for it क्योंकि she bought it for herself. So she said कि oh I'll bring it. और मैंने कहा एक दिन पहले कर दो क्योंकि I cannot panic that time after you guys come in. I want to do things beforehand. So she sent me all the stuff a day earlier. और I still couldn't do it. मैं और मेरी बहन हमने कहा कि वो हम मिलकर आराम से कर लेंगे और मतलब I was so stressed about it, not just the decor and stuff. I was just really stressed about. I was literally panicking. मैं अपनी मम्मा को ऐसे एक दिन बात कर दें. Let me tell everyone कि वो हम संडे का करते थे. I was literally panicking कि I do not know how things will get done. और मतलब 1 बज गया था रात का और ऑब्वियसली अगले दिन दोपहर की ढोलकी थी और कोई डेकोर नहीं हुआ था. ऑब्वियसली विद फूड आई थिंक के आई डू नॉट स्ट्रेस दैट मच विद फूड एंड नॉट इवन माई मॉम क्योंकि अब ना हमारे हाथ पे आ चुकी हैं चीज़ें तो मतलब वंस वी डिसाइड कि ओ वी गोना मेक दिस एंड वी नो हाउ टू मेक इट and we have made those things before so it's like very easy for us. So my mom was making the food and I was making the Swedish so I was very chill about that कि वो मैं आराम से कर लूँगी क्योंकि मुझे पता है मेरे हाथ पे चीज़ें मैं कर लूँगी. और डेकोर I was so stressed कि पता नहीं क्या होना है कैसे होना है. रात के 1 बज गए और ना my sister just went in and sleep because she had a college next day her college next day so she slept in and I was literally like on the verge of breakdown. I was literally in tears और my mom called my dad and said कि ना रबिया बहुत परेशान है कुछ भी नहीं हुआ तो my dad was out with his friends that time and he was like okay I'm coming back so he came in and he did the whole backdrop like shout out to him लेकिन I would not have done if it wasn't him. He came in and he said oh कोई मसला नहीं and he did the backdrop और मतलब it was nice it was good. मैं मतलब वैसा नहीं था जैसे मैं चाहती थी और ऑब्वियसली आई डिड नॉट हैव इनफ सप्लाईज फॉर इट. मेरे पास जो थी ना वो फेरी लाइट्स थी और उनमें से आधी फेरी लाइट्स चली भी नहीं तो इट वॉज नॉट द बेस्ट बैकड्रॉप एवर लेकिन इट वॉज गुड इट फेल्ट फेस्टिव. और उसके बाद जो है माई फ्रेंड्स केम इन नेक्स्ट डे तो दे डिड अ लिटिल 2-3 थिंग्स टू और आई वॉज रियली इन द पैनिक मोड उनके आने से पहले तक भी लेकिन वंस दे केम इन it was so much fun कि जब वो जा रहे थे तो I said oh my god I love hosting I'll do it again this is so much fun. तो जो है ना it was so much fun. My dad also helped with so much stuff मतलब he helped with me and my mom so much with so much stuff even though he had to go out to do things लेकिन we were in so panic or there was so much things to be done so he was like okay let me stay and help you guys. My dad helped a lot my sister helped a lot my mom helped a lot क्योंकि उनके बगैर कुछ होना ही नहीं था. और फिर जो है when they finally came in तो I was like relaxed के okay now अब वो आ गए तो अब इतना टेंशन नहीं है. It was so much fun it was so much entertaining. जो पिछली 2 ढोलकियाँ हुई थी उनमें जो है सिर्फ ढोलकी हो रही थी एंड पीपल डिड नॉट नो के व्हाट टू डू. मैंने सोचा हुआ था कि इस ढोलकी में वील प्ले गेम्स क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ढोलकीज जिसमें पीपल प्ले म्यूजिकल चेयर्स और देयर इज दिस अदर गेम और सम पीपल इवन प्ले कार्ड्स एक्सेट्रा एंड इट्स सो मच फन. तो मुझे पता था कि वी हैव डन एनफ ढोलकी वील प्ले गेम्स. सो आई जस्ट सजेस्टेड दिस आइडिया कि लेट्स प्ले म्यूजिकल चेयर एंड इट वाज सो मच फन यू गाइस लाइक एवरीवन वाज लाफिंग. माय मॉम हैड द बेस्ट टाइम एवर शी वाज लाफिंग और it was मतलब कि माशाल्लाह it was so like it was so much fun and everyone left the home so happy. I love my parents for that कि they always मतलब
participate, or they always like get in and make others feel comfortable. That's why everyone, I think, felt very comfortable in the house, because my dad was like very into it and he was interacting with everyone. My mom was really into it and मतलब कि chill scene था, तो they felt really comfortable too, और उन्होंने और enjoy किया उस चीज़ की वजह से. तो that the thing with my family is that if there's something happening तो everyone is into it, बेशक एक बंदे का हो. और इस वजह से जो है द ढोलकी फेल्ट रियली पर्सनल, क्योंकि एवरी वन वॉज मतलब कि एवरी सिंगल पर्सन इन माई फैमिली participated in it so much, and it was so much fun for the first ढोलकी ever that happened in my home. Like, and I love hosting, मतलब कि I do love hosting and I would love to do more. और मैंने सोचा हुआ है कि when like I'll be a proper adult or I'll be in my midlife, or like when I'll have my own home and stuff, so I'll arrange get-togethers all the time. Not all the time, लेकिन I'll at least try to मतलब कि have get-together at least 4 times a year, I guess. क्योंकि I love having people over my home. और at the same time मतलब I just really ये तो ढोलकी थी obviously और इसमें नहीं था, लेकिन I love the idea of one dish, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे एक बंदे पे बोझ नहीं पड़ता और एवरीवन एंजॉयज. और सेम विद मी, कि मुझे अगर किसी के घर जाना होता है और मुझे होता है कि ओ इन्होंने मेरा खाना किया, तो आई वुड लव टू ब्रिंग समथिंग, बेशक मीठा हो बेशक कुछ हो. तो मुझे मतलब कि मैंने ये सोचा हुआ है कि मैंने आई विल बी एल्डर, तो आई विल रियली जस्ट लाइक put in the concept of one dish कि अगर we are doing get together तो मतलब कि everyone is participating, ताकि एक बंदे पे जो है वो इतना ज़्यादा जिम्मेदारी भी नहीं है, and everyone is enjoying and everyone is having a fun time. Obviously मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि with ढोलकी you cannot do one dish, or if you're giving a party अपनी किसी चीज़ की, लेकिन if मतलब कि with get togethers I love the idea of one dish, if that makes sense. I hope that does. लेकिन मुझे लगता है कि द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ऑब्वियसली आई वाज इन प्योर पैनिक, लेकिन seeing that my friend had so much fun and they were so much comfortable, they laughed and they were cheerful, and my parents enjoyed so much mashallah, और मतलब कि everyone was so happy at the end. So it was so worth it. It was worth every single thing ever, or I would love to do it again, like after a few months. Yeah, मतलब I love to do a get together, not just ढोलकी, लेकिन वैसे ही get together. I love that. और I think I do क्योंकि मुझे लगता है कि in my friend circle I am the friend जिसके घर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं. मतलब मेरे मतलब कि I have made और मुझे लगता है कि a part of me is like कि for me it's easier to have people over than to go. तो मैं कहती हूँ कि यार मेरी तरफ आ जाओ. Also my friends work nearby, तो it was much more easier. लेकिन I love to be that friend जिसके घर मतलब कि you can go and have fun and feel comfortable. लेकिन yeah, it was so much fun. लेकिन now I feel like कि I just really need a break, क्योंकि that one thing sucked out everything in me, and I'm like, okay, I'm not gonna do a lot of things now, और मैंने अब मतलब कि I'll take things easy, और मतलब कि that was a lot. और जब वो ख़त्म हुआ तो I was actually relieved too कि okay, मतलब अब मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी. Now I'll just enjoy the other events, क्योंकि I did mine, तो I'll just go and enjoy the other things now, क्योंकि other friends of mine are planning to do like things. तो मैंने कहा कि okay, मतलब कि I'll just now go and enjoy. लेकिन हालांकि मुझे जाने की भी बहुत टेंशन होती है कहीं पे. ऐसा नहीं है, मुझे कहीं जाना हो तो भी I'm like very stressed कि कैसे जाना है, कन्वीनियंस कि मतलब क्या करना है, कितने बजे जाना है, घर से कॉल आना शुरू होती है, कब आना है. तो that is also stressful. लेकिन it's not that stressful than having like 15 people over and managing all of it. So that was more stressful. But I am very happy that I'm done with it. I'm kind of relieved. I'm happy that people had so much fun. Everyone said that they had the most fun at my home, which is the best compliment ever. Like, best compliment ever. I won. Lekin, yeah, it was really fun. So if you guys are planning to do any dholki for your friend, so you can like DM me for tips. Like, I'll tell you
फूड डिपार्टमेंट में क्या करना है, डेकोर में क्या करना है, और हाउ टू कीप द गेस्ट एंटरटेन एंड योर सेल्फ एंटरटेन. तो आई कैन लाइक टेल यू स्टफ अबाउट दैट. आई वॉन्टेड टू शेयर ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन मतलब कि ऑब्वियसली आई हैड टू रिस्पेक्ट अदर पीपल्स प्राइवेसी, और मैं दिखा नहीं सकती थी, और इस वजह से आई couldn't शेयर एनी थिंग एट ऑल, क्योंकि मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं बस सिर्फ पोस्ट कर सकूँ और उसमें किसी की शक्ल ना आए या फिर कोई अनकंफर्टेबल हो. एंड ऑब्वियसली विद वेडिंग इतना वो नज़र लगने का आपको डर होता है और वो सब कुछ होता है, तो इस वजह से आई कुड नॉट पोस्ट एनी थिंग एट ऑल. और आई होप you guys understand. लेकिन trust me, it was really fun. I did post it on my private account and a lot of you guys are in my private account. So yeah, you guys saw it. Okay, let's get back to what I said in the start. Okay, I feel all over the place. I don't know, I can't even explain it. Like in life just feels like there's so much happening and at the same time there's nothing happening. And there's so much to do. I have so much places to be and I have done nothing. Like I don't want to do anything and I feel just so empty. और मुझे लगता है कि कुछ तो it is with the weather, क्योंकि मतलब I love winters, लेकिन और I wait for winter so much, लेकिन जब winters आती हैं तो I cannot enjoy it that much. I feel very like empty and there's some void, or I just don't feel happy all the time. Or वैसे usually I'm very cheerful and I always look forward to things. I still do look forward. I am really looking forward to a lot of things in life, and I make myself keep going. Like whenever I just wake up in the morning, there's this sudden sadness that hits me. मैंने ये पहले भी बात की थी कि whenever I sleep, I am very happy कि I am gonna finally sleep, I'm gonna read my book और ये करूँगी. लेकिन when I wake up in the morning, I just do not have the energy to go through the whole day and do stuff और वो सब कुछ करूँ. और कभी कभी ये होता है कि मैं एक चीज़ में स्टक हो जाती हूँ. जैसे अगर मैं एक काम कर रही हूँ तो मुझे दूसरा काम करने में बहुत टाइम लगता है. और मैं अगर जैसे मैं बैठी हूँ और इशा की अजान हो गई है तो मैं कभी कभी इतना लेट कर देती हूँ इशा पढ़ने के लिए कि अभी मैं पढ़ती हूँ, अभी 5 मिनट तक पढ़ती हूँ, 5 मिनट तक करती हूँ कि मुझे 2 बज जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड. और फिर उसके बाद अगर मैं मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और अगर मैंने मोबाइल इसलिए पकड़ा कि आई रीड माई बुक, तो भी पहले मैं सारा सोशल मीडिया स्क्रॉल करती हूँ फॉर एन आवर एंड देन आई रीड द बुक. और कभी कभी ये होता है कि the more I scroll social media, knowing that I have to do something else or I am wasting my time, it gives me anxiety. Like, I can't stop it. I can't control myself. So, but at the same time, मुझे बस समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ. I do feel a little bit sad. I do feel a little void. I feel कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं कुछ नहीं कर रही. या कभी कभी I feel कि मैं क्या करूँ, मतलब what's happening with life, what's the next goal, what I'm doing, do I want to do anything, कुछ मतलब मैं क्या करूँ. I don't want to do anything, I don't want anything from life. मुझे नहीं समझ आ रही, मैं बस चाहती हूँ कि मैं बस लेटी रहूँ और मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है या मैं कहाँ हूँ. और all of this I cannot articulate it better. Like, I just feel all over the place, and sometimes it's sadness, sometimes I feel overwhelmed, sometimes I feel underwhelmed, or I just don't think I'm enjoying the weather and life that much जैसे मैंने मतलब कि इस साल किया है. और मुझे फिर रियलाइज़ होता है obviously we are in the end of the year और it's okay. और मैंने अब जो है वो ये डिसाइड किया है, इंटेंशनली डिसाइड किया है कि आई एम गोना स्लो डाउन विद माई लाइफ, व्हिच मीन्स के आई अटेम्प्ट टू डू दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स. और यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता था एज अ स्टूडेंट, जब मेरा बर्न आउट हो जाता था तो मैं कहती थी कि आई एम गोना स्लो डाउन, आई एम गोना डू बेयर मिनिमम, आई एम गोना डू नथिंग और देखी जाएगी आगे जो होगा. मतलब आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ अबाउट दीज थिंग्स राइट नाउ, और इस वजह से आई जस्ट कीप गोइंग. तो इस वजह से मुझे लगता है कि व्हाट आई एम गोना डू फॉर द रेस्ट ऑफ
December is obviously the year is ending. I already know the things I want to do next year. There's a lot of things that need to be done. और मुझे पता है कि मेरे next year के goals क्या हैं और मुझे करना क्या है. And we are in the end of the year और next year start होने हैं. अगले साल रमज़ान भी is around the corner. रमज़ान would be in March. तो obviously मुझे लगता है कि things will be proceeding very fast अगले साल. तो इस वजह से मुझे लगता है कि before I get into the next year I need to take my time off. I need to relax my brain and I do not need to stress enough about things. वरना जो है मैं ना अभी ये टाइम सही से गुजार पाऊंगी और उसके बाद जब जनवरी स्टार्ट होगा तो फिर मुझे वो गोल्स में भी अचीव करने में मज़ा नहीं आएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी to just stop functioning right now. And if you are personally going through this, then I'll recommend you to, क्योंकि I would do these things. और ज़रूरी नहीं है कि आपने दिसंबर में करना है. just works for me कि दिसंबर है and I can just start fresh जनवरी से. लेकिन obviously you can do it anytime. मैं जब मतलब कि as he said कि जब मैं यूनिवर्सिटी में होती थी तो I would do this like twice or thrice in my semester कि I would just stop like proceeding for a weekend or a week कि I'll just take things easy or I'll just मतलब कि do the bare minimum and I won't go extra mile. और उसके बाद जब मतलब कि I'll recollect all my energy and enthusiasm तो फिर I can start again. तो मैंने अब सोचा है क्योंकि अभी मैं I am staying at home कि I'm gonna live the life is December very slowly. I love December for the fact that there is a lot of festive vibes. Obviously मतलब हमारे मतलब कि मेरे मुल्क का या फिर मतलब कि मेरा कोई फेस्टिवल नहीं है लेकिन I just love seeing people के oh they're buying new stuff or they're like trying new things or I love मतलब कि the vibe of it. I don't know how to explain it लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है और किसी भी रिलीजन का कोई भी फेस्टिवल हो मुझे अच्छा लगता है देख के. मतलब कि इवन जब अभी कुछ अर्सा पहले दिवाली थी तो it was nice watching content क्योंकि I love festive vibe. I love watching people happy. तो मतलब कि even though Christmas is around the corner and obviously I don't celebrate it और वो सब कुछ है लेकिन मुझे लगता है कि I love seeing कि there's some country in the world जहाँ पे decoration हुई हुई and people are enjoying it. I told you guys many times कि I love watching Vlogmas, which is a lot of YouTubers too. इस टाइम पे and it's just so much fun and I just love seeing people happy and people like decorating their house and buying new stuff or a lot of movies come out. Again, we need to be very mindful of especially this time big what type of content we are watching and what type of things we are consuming and hyping क्योंकि a lot of people are Zionist and a lot of people are pro-Israeli. तो इस वजह से just be mindful of that. लेकिन I just love कि there's like special books for this season and there's like a lot of sales happen. अब तो खैर कोई भी नहीं है और just all of this. So I really enjoy that and I really love seeing people happy. I also see a lot of like reels and stuff where people are like oh we are doing this or we are making this. Even with fall, I love fall क्योंकि I love the festive vibe it brings कि a lot of people are like oh let's make pumpkin spice this, let's make that, let's make an apple pie. With Ramzan a lot of people, obviously Ramzan holds a very spiritual value for me लेकिन the people of other religion क्योंकि for us it's like the time where are we seeking spirituality but at the same time we're very happy and it's that the whole month is just positive vibes and happiness and you feel generally really happy and you miss Ramzan and you miss the whole routine. So I love those things. I hope कि I make sense. So I also love seeing people. तो इस वजह से I really I'm really enjoying the content that is coming in. Obviously, again we need to be mindful with the content we are watching. And I love that. So I just decided कि I'm gonna sit back and enjoy and like read and watch क्योंकि I'm not watching and reading that much आजकल. तो मैंने सोचा कि I'm gonna sit back. I'm not gonna go extra mile to do things to get tasks done. I'm gonna do the bare minimum. और ये मेरा गोल है इस दिसंबर में कि I'm gonna do the bare minimum. I'm just gonna do the things that are needed to be done and that are necessary to be done वरना उसके बगैर मैं मर जाऊंगी.
लेकिन उसके अलावा जो है मुझे एक्स्ट्रा माइल नहीं जाना, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी, मुझे अभी बैठ के ये नहीं सोचना कि ओ मुझे ये करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है. और आई डोंट वांट टू बी प्रोडक्टिव, आई डोंट वांट कि मैं जो हूँ वो ये करूँ वो करूँ. आई जस्ट वांट टू डू द थिंग्स आई रियली वांट टू डू, और आई जस्ट वांट टू बी वेरी स्लो, or I just don't want to put my mind or energy in a lot of things, and I don't want to plan a lot of things. I told you guys कि जो दिसंबर का लास्ट जो 10 दिन है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा शादियाँ हैं, ठीक है. 3 वेडिंग्स मैंने अटेंड करनी है और इट वुड बी ऑलरेडी विल बी वेरी chaotic, और मैंने थक जाना है. तो इस वजह से आई जस्ट वांट टू सेव माई एनर्जी, ताकि उसको मैं एंड मनी, ताकि मैं उस टाइम को जो है वो अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकूं और टू लिव इन दैट मोमेंट. और उसके लिए अभी जो है मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना, और मुझे जो है वो इफ़ आई वांट टू स्लीप टिल लाइक 12 तो आई वुड. लेकिन मेरा ये सीन है कि मैं जितना लेट उठूँ ना मुझे उतना बुरा फील होता है, तो आई जस्ट ट्राई टू वेक अप अर्ली. लेकिन एट द सेम टाइम आई डोंट वांट टू डू मच. आई वांट प्रेशर माई सेल्फ कि ओ मुझे ये चीज़ बनानी है क्योंकि इट्स विंटर, तो आई वांट टू ईट दैट एंड आई वांट टू मेक दैट. इफ़ आई वांट टू आई वुड, इफ़ आई डोंट वांट टू आई वुड नॉट. मुझे अपने आप को ये नहीं करना कि ओ मुझे ये कपड़े पहनने हैं या मुझे ये कपड़े खरीदने हैं. दैट इज़ अ वेरी डम्प थिंग. लेकिन आई एम जस्ट गिविंग बेसिक एग्जाम्पल ताकि जो है ना सबको समझ आ जाए. लेकिन अगेन मतलब जैसे अभी लास्ट वीक जो है वो सफायर की सेल थी, एंड आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो, लेकिन आई buy a lot of things from the sale, स्पेशली जब मतलब कि सेल, क्योंकि आई मेनली बाय थिंग्स जब सेल ही लगती है. लेकिन इस बार मैंने कहा आई एंट बाइंग एनी थिंग, मुझे नहीं मतलब कि आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, आई वांट टू बाय दिस वन कोट. और वो सोल्ड आउट हो गया. मैंने कहा दैट्स इट, आई एम नॉट गेटिंग एनी थिंग. दैट्स अ वेरी डम्ब एग्जाम्पल टू गिव, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव बेसिक एग्जाम्पल्स, क्योंकि मतलब कि मैं ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ज़्यादा स्पेसिफिक क्या एग्जाम्पल दूँ. With university what I would do as a student was that कि मैं जो हूँ वो I would like stop memorizing things. हाँ अगर कोई assignment है तो I'll just give it on time, लेकिन I would not put my mind that much on things. अगर मैंने lecture attend करना मेरे लिए ज़रूरी है तो मैं बैठ के लेक्चर अटेंड कर रही हूँ और मैं नोट कर रही हूँ, लेकिन शायद मैं वो चीज़ जाकर रिवाइज नहीं करी, मैं उसको अगले दिन कर रही हूँ. ऑब्वियसली इट्स गुड टू डू ऑल ऑफ दिस, लेकिन जब इफ़ आई एम दैट टायर्ड विद लाइफ तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इट्स ओके इफ़ आई एम टेकिंग अ डे ऑफ एंड आई एम लाइक नॉट पुटिंग माई माइंड इन टू स्टफ. और कभी कभी आपका बाहर जाने का भी नहीं दिल चाहता, आपका नहीं दिल चाहता हैंग आउट करने का, गैदरिंग करने का और सब कुछ बहुत चीज़ें करने का. तो इट्स जस्ट द टाइम कि यू नीड टू लाइक stop with things and stop with multitasking. You need to like take out time to enjoy, and enjoy का मतलब ये कि enjoy the simplicity of life, कि whatever you are doing, कि आपकी जो भी रूटीन है आप उसको enjoy कर रहे हैं. If you are traveling and you're going your way back at home or going to somewhere, तो you can just take your time to think about yourself instead of thinking कि अब मुझे घर जाके क्या करना है, मुझे वहाँ क्या करना है, मुझे ये क्या करना है, मुझे वो क्या करना है. तो or you can like appreciate the little things in life के you're eating good and you're spoiling yourself a bit with what you eat. And it also means कि अगर आप एक काम कर रहे हो तो आप उस पर 100% फोकस करो या उसके बारे में सोचो, and just do not think कि मुझे अभी ये मतलब कि do not like fill your mind with a lot of stuff or do not multitask. ये कभी कभी होता है ना कि even though you are not doing anything, लेकिन आपके जहन में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है और मतलब मुझे ये चीज़ अभी करनी है और इसकी वजह से मुझे इसका स्ट्रेस है. इवन अगर आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना हो, बेसिकली जैसे अगर मैं आई एम लुकिंग फॉर अप्लाइंग इन मास्टर्स, सो आई हैव टू लाइक फिल दिस फॉर्म और वो सब कुछ है, मुझे उस चीज़ का भी स्ट्रेस होता है. तो इवन द थॉट के ओ आई एम नॉट गोना डू दैट, आई एम गोना अप्लाई नेक्स्ट टाइम, और मैं देख रही मैं कुछ और देख लूँगी, तो दैट इज़ सो मच रिलैक्सिंग टू मी, क्योंकि इवन दो आई हैवंट डन इट, लेकिन मैं उस चीज़ के बारे में सोच के स्ट्रेस आउट कर रही हूँ. तो जब मैंने सोच लिया ना कि ओ मैंने नहीं ये चीज़ करनी, तो मेरे लिए वो चीज़ फिर बहुत ईजी हो जाती है. एंड इट्स जस्ट लाइक comforting for me कि ठीक है आई एम नॉट डूइंग इट एंड आई सेटिस्फाइड विद इट, क्योंकि मुझे वो चीज़ के बारे में सोच के ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है.
इफ़ यू नो व्हाट आई एम सेइंग. कभी कभी मतलब कि अगेन जैसे आई एम सेइंग कि आई एम स्लोइंग डाउन इन लाइफ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सब कुछ काम करना छोड़ दिया. आई एम स्टिल डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. लेकिन मैंने जो है मतलब कि मैंने सोच लिया कि मैंने ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी, मैंने किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं. आई डू नॉट वांट टू स्ट्रेस इनफ अबाउट थिंग्स और पीपल और अदर पीपल और वो सब कुछ है. मुझे सिर्फ I just want to enjoy. I don't want to use my brain, basically. With what I'm saying, I am slowing down in life. I just don't want to use my brain with a lot of things. I don't. So, इस वजह से I think it is important कि sometimes you just want to, मतलब कि you would want to just sit back and relax and enjoy things and see कि wherever life takes you. और जैसे मैंने कहा है कि with January मतलब कि I want to like start fresh and start with new things and start clean तो वैसे भी हूँ, लेकिन I just want to start मतलब कि if you want to give yourself a fresh start तो I think कि rest is required. So it's important कि you can give yourself an off इस महीना या फिर एक हफ्ता या फिर 2 हफ्ता, वट एवर यू थिंक इज़ रिक्वायर्ड एंड इज़ नेसेसरी, एंड यू कैन स्टार्ट फ्रेश. और मतलब कि इट्स नॉट जस्ट फॉर एट मतलब कि फॉर द एंड ऑफ द ईयर, यू कैन डू इट एनी टाइम. तो इस वजह से मुझे लगता है कि सिंस 2014 इंशाल्लाह वुड बी अ ग्रेट ईयर फॉर अस एंड वी वांट टू मूव एंड डू थिंग्स. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं चिल रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ताकि आई कुड स्टार्ट फ्रेश एंड स्टार्ट न्यू विद अ फ्रेश माइंड. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी मैं अपने जहन को रेस्ट दूँ थोड़ा सा, ताकि जब नया साल आए तो मैं और चीज़ों के बारे में सोच सकूँ और मैं फ्रेशली उन चीज़ों के बारे में सोच सकूँ और मैं डिफरेंट अप्रोच कर सकूँ. तो take this as you want to, लेकिन for me it's like I'm gonna stop using my mind for a while. I'm gonna stop stressing about things. अगर मुझसे कुछ नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा. मुझे ना even that is again I am giving dumb example क्योंकि I don't know कि मैं सही example क्या दूँ. लेकिन even I had this stress कि oh my god I want to post something on Instagram every Saturday, और इस सैटरडे मेरे पास कुछ नहीं था पोस्ट करने के लिए, और आई वॉज स्ट्रेसिंग अबाउट इट इवन दो आई हैड नथिंग. और मैंने कहा अगर इफ़ आई हैव नथिंग तो आई विल नॉट जस्ट पोस्ट इट, एंड आई वाज लाइक ओके आई विल नॉट पोस्ट इट, और मसला ख़त्म. नहीं हुआ. कभी कभी ये होता है कि ना मैं कोई चीज़ देखती हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी देखती हूँ और मैं कहती हूँ ओ माई गॉड आई वुड लव टू डू इट, आई वॉन्ट टू लाइक डू इट. लेकिन आई स्टार्ट स्ट्रेसिंग अबाउट इट कि ओ माई गॉड मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया उस चीज़ में, मैंने अप्लाई नहीं किया. और फिर जब मैं उस चीज़ के बारे में देख रही होती हूँ और आई रियलाइज़ कि ओ आई एम नॉट एलिजिबल फॉर इट, या फिर इसकी तो डेडलाइन गुजर गई है, तो आई जस्ट गेट रिलीव्ड. मतलब इट्स नॉट लाइक आई एम सैड, आई जस्ट गेट रिलीव्ड कि ओके अब तो मतलब कि आई कैन नॉट रिग्रेट नाउ अबाउट इट नाउ, और आई कैन नॉट स्ट्रेस अबाउट इट नाउ, क्योंकि आई कांट इवन डू इट नाउ. मतलब अब तो मैं कर ही नहीं सकती, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है. तो मुझे लगता है कि जब मेरे साथ ऐसा होना शुरू हो जाए ना, तो आई रियलाइज कि आई एम जस्ट पुशिंग माई सेल्फ टू डू थिंग्स दैट आई डोंट रियली वॉन्ट टू डू, और आई शुड लाइक टेक अ स्टेप बैक एंड रिलैक्स, एंड इट्स ओके. I cannot do every single thing that is happening in this world and it's okay. और मेरे पास अभी जो मेरे हाथ में है, मुझे उन चीज़ों को करना चाहिए, उन टास्क को करना चाहिए, और फिर आई विल स्टार्ट फ्रेश अनदर टाइम. और इस वजह से आपको एक चीज़ एक टाइम पे लेके चलनी चाहिए. तो that's what I'm gonna do. I hope whatever I said made sense. To be honest, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आज किस चीज़ के बारे में बात करूँ, क्योंकि I was feeling a lot of emotions at the same time. और मुझे जब किसी चीज़ के बारे में बात करनी होती है तो मेरे साथ ये मसला है कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव मैं सोच रही हूँ तो आई जस्ट डोंट, मुझे पता है कि a lot of people are already dealing with so much, और अगर मैं बैठ के जो है वो सिर्फ नेगेटिव बातें करूँगी पूरी पॉडकास्ट में, तो इस पे किसी और को भी मतलब कि किसी और को बैडली इफेक्ट हो सकता है. कोई शायद मैं कोई ऐसी बात बोल दूँ जो कोई चीज़ के बारे में सोच भी नहीं रहा था, लेकिन मेरे बोलने से जो है वो फिर मतलब कि वो भी उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू हो गया. समटाइम्स इट इज़ कम्फर्टिंग टू सी कि आप किसी इमोशन से गो थ्रू कर रहे हो, लेकिन और वो आपके जो साथ इंसान है वो भी उस चीज़ से गो थ्रू करे, एंड इट्स कम्फर्टिंग कि यू डोंट फील अलोन. लेकिन I personally do not talk about things until I do not process it, and I do not know कि how I overcome it, क्योंकि I want to talk about problems, और मैं हर पॉडकास्ट में किसी ना किसी इशू या प्रॉब्लम या किसी चीज़ फीलिंग या फिर मेंटल स्टेट के बारे में बात करती हूँ व्हिच वी गो थ्रू. लेकिन एट द सेम टाइम्स आई वांट टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हेल्प मी एंड दैट कुड मेक यू फील बेटर, that at the end of the episode I'm also giving you something कि this is how
और इस वजह से मैं इतने अरसे से सोच रही हूँ कि आई हैव दिस वॉइड, आई फील एम्प्टी, आई फील सैड, लेकिन मैं क्या करूँ इस बारे में. एंड देन yesterday I realized I should just slow down with life and I should just stop putting effort. और फिर मैंने कहा दिस इज लिटरली द सोल्यूशन ऑफ इट. तो अगर मैं सिर्फ एम्प्टीनेस की बात करती और मैं साथ सोल्यूशन न देती कि व्हाट आई डिड, व्हाट आई एम गोना डू या व्हाट आई डिड, तो मुझे लगता है कि तब तक मैं वो उस टॉपिक के बारे में या उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकती. क्योंकि if I do not have anything good to say at the end, if I am not ending the podcast on a positive note or saying something that could help someone or comfort someone, तो आई वॉन्ट टू कीप, मतलब कि ऐसा नहीं है ऑब्वियसली कि मैं हर वक्त पॉजिटिव ही रहती हूँ और मेरी हमेशा पॉजिटिविटी चलती रहती है और मैं बस हमेशा खुश ही रहती हूँ. आई एम हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम एंड आई डू सीक पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस और all the time, लेकिन at the same time obviously there are negative things too, or I openly talk about it, लेकिन at the same time I just think कि I cannot talk about it before knowing कि how I get myself out of it, या फिर मेरे पास इस चीज़ का क्या solution है, how it help for me, और ताकि मैं जो उस चीज़ से go through करे मैं उसको ये बता सकूँ yes it happens, लेकिन at the end of the day you will be fine and these are the things you can do that are realistic and that are not a lot, जिसकी वजह से शायद आपको हेल्प मिल सकती है. तो इस वजह से आई जस्ट फील कि फॉर मी राइट नाउ एंड वट एवर आई एम फीलिंग इट इज़ जस्ट नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू स्टॉप विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड जस्ट sit back, relax, and I just feel so relaxed even thinking the fact कि I'm gonna be slow this month और उसके बाद मैं next month से सब कुछ rapidly कर सकती हूँ और वो सब कुछ कर सकती हूँ. तो yes, this is what I'm gonna do for the next December. Nothing's gonna change really, it's just the mental thing. I should stop worrying about things. So let me know if all of this helped you. I am, मतलब यू गाइज ऑलरेडी नो, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे भी लगाया था इट्स एक्चुअली ऑलरेडी वेडनेसडे और मैं कल पूरी पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि आई वॉज आउट इन द मार्केट. और मैं जब वापस, मतलब कि आई कैन नॉट टेल यू गाइज कि मैं सर्दी में बाहर चली जाऊँ, एंड I was out and I came back and I could not do shit. Like मैं कुछ नहीं कर सकती थी, कर पा रही थी, and it just made me so sad कि I have not done work. मेरी पॉडकास्ट जो है मैंने ना रिकॉर्ड किया ना एडिट किया, एंड आई हैव सो मच टू डू टुडे. मैंने एडिट करना है, रिकॉर्ड करना है और फिर मैंने इतना सब कुछ करना है आज. तो I already said I'm gonna be slow with life, लेकिन obviously I have to do the bare minimum और उसके बाद I can relax and just like sit down. तो इस वजह से मुझे लगता है कि मतलब कि इवन विद द पॉडकास्ट मुझे लगता है कि अगर मेरे जहन में कोई टॉपिक नहीं आ रहा फॉर द नेक्स्ट फ्यू पॉडकास्ट, आई एम जस्ट गोना कम एंड just talk to you guys and chill. तो इस वजह से मुझे लगता है कि I'll just stop doing things that are giving me stress. लेकिन at the same time I have to do the bare minimum. तो इस वजह से कल मैंने अपना पूरा दिन ज़ाया किया है और इस वजह से आज जो है मतलब कि I have to do, मतलब कि जैसे मुझे लग रहा है, मतलब कि again with editing मुझे लगता है कि it's not necessary, I can just put that episode, so I might not edit it and just post it and see. क्योंकि मैं वैसे भी इतना edit नहीं करती, I just listen to the podcast कि वो मैंने बोला क्या, मैंने कोई खच तो नहीं मार दी. लेकिन since I'm not editing this episode, तो अगर मैंने कोई मार दिया तो I'm sorry about that and you can tell कि how confused I am. लेकिन yeah, there is a lot of things that I have to do today. लेकिन आज के बाद उसके बाद फिर I'll just take things easily and I have to divide things that are bare minimum that I have to do, which is obviously making breakfast and praying and work. These are the और मतलब कि making lunch वगैरह, लेकिन food, नमाज और work, these are the three things that I think that are important and these are the only things that I want to do up for the rest of the December. और उसके अलावा I'll just watch fiction and YouTube and books and read books and that's it. That's how I'm gonna, like, how I decide to spend my December, and it will be fun. And I hope next time I'll come so we can have a fun little interesting topic. If you have any requests, so please let me know. I'll see if I can make an episode, and we'll shift it, schedule it to January. Lekin it would be fun. I hope ke whatever you're going through or is gets easier for you, and I hope ke this episode helped you in letting go a lot of things and just focusing on one task at once. जैसे आज मैं सुबह उठी हूँ
तो आई वाज लाइक मैंने पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करनी है, मैंने एडिट भी करनी है, मैंने काम भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है. और उसके बाद मैंने कहा रबिया लेट्स जस्ट फोकस ऑन वन थिंग. आई वोक अप, आई मेड ब्रेकफास्ट, अब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ. उसके बाद मैंने मेरे ख्याल से मतलब कि जोहर का डाउन टाइम हो गया. आई प्रे. उसके बाद फिर मैं जो हूँ वो आई सी कि माई मॉम नीड्स एनी हेल्प इन थिंग्स. उसके बाद आई एडिट क्योंकि पीपल कैन वेट, इट्स ओके. और and upload, and उसके बाद I'll work, and then I'll listen to another podcast. I told you guys कि I'm listening to Rotten Mango podcast. They are really interesting to listen. तो उनको सुन के मुझे बहुत मज़ा आता है. I am so excited आजकल to work, and क्योंकि साथ में जो हूँ वो पॉडकास्ट सुन सकती हूँ, तो it's just very exciting for me. और yeah, that's it. उसके बाद I can obviously read my book, which makes me very happy, and I can watch things, and it was be nice. I don't know if I'm convincing you guys or I'm convincing myself. Like I'm all over the place. Or I'll update you guys next week what happened. Like, and if you are going through the same state, so you need to like slow down a bit and stop focusing on a lot of things at once. That's it for the podcast. I hope you enjoyed the episode, or I hope it helped you in some way. Or yeah, oh my god, Spotify Wrap came last week on the 29th December, or it was just so amazing, and I was so grateful. Obviously a lot of people from Pakistan मुझे नहीं मिले क्योंकि पाकिस्तान में स्पॉटिफाई है नहीं, लेकिन सो मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया, नॉट सो मैनी पीपल लेकिन अ फ्यू पीपल फ्रॉम इंडिया मैसेज मी एंड सेड यू आर माय टॉप आर्टिस्ट, व्हिच इज अमेजिंग, वेरी 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 अमेजिंग. और उसके बाद आई गॉट प्रेजेंटेड माई स्पॉटिफाई रैप, मतलब जो मेरे पॉडकास्ट का रैप था और जितने लोगों ने सुना उसका मुझे पूरा ओवरऑल रिव्यू मिला ऑन द लाइक पॉडकास्ट ऐप. तो उस पर मतलब कि दैट वॉज रियली अमेजिंग, एंड आई शेयर्ड विद यू गाइज ऑन इंस्टाग्राम कि हाउ मैनी पीपल और मेजॉरिटी किस कंट्री में मुझे स्पॉटिफाई से सुन रहे हैं, इट्स इंडिया. तो शाउट आउट टू इंडिया एंड इंडियन पीपल, आई लव यू गाइज सो मच. और आई नो कि 70% people are actually listening, 60% people I think, or 55% people are listening from Apple Podcast, or 15% people are listening from Google Podcast. So taking in consideration of that, I just saw the 30% of the audience, which is very nice and very good. जब मैंने podcast start की थी मुझे नहीं लगा था कि 4 से ज़्यादा लोग सुनेंगे, क्योंकि लेकिन मतलब I am on my like 47th episode. And that's a lot. I never thought कि मैं 47 episodes कर सकूँगी. मैंने सोचा था मैं podcast करूँगी, लेकिन मैंने मतलब मुझे नहीं पता था कि till how far I'll go. Or 47 podcast is a lot, and this makes me think I'll keep doing it forever. तो इस वजह से it just made me so happy. Please stick with me. Or I'm so happy that I could be consistent with this podcast. This podcast really makes me happy, and you guys' review really makes me happy. This one girl told me that this podcast is the best thing that happened to her this year, and matlab that made me so happy. Matlab she's a friend of mine, so she told me that, and she said that it made her try so many new things and be more excited for life and stuff. And same, I think it just feels nice to look back and think, oh, I had to come up a topic every week to talk about, and to talk something positively about that could help people, and I got good feedback from it. So that literally means like everything to me, and I want to continue doing that. And if you want to do something like that, I will totally recommend, क्योंकि मैंने start भी January से ही किया था, तो I think it's the good right time कि you can plan about it and you can start. लेकिन if you do not think you are prepared right now, obviously you can start anytime. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जनवरी में ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं, कुछ चीज़ें जून में भी स्टार्ट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें अप्रैल में भी स्टार्ट हो सकती हैं. कभी कभी ये होता है कि नए सीजन के साथ जो है वो नई चीज़ स्टार्ट होती है. एवरी मंडे इज़ अ न्यू स्टार्ट, एवरी डे इज़ एक्चुअली अ न्यू स्टार्ट, लेकिन चलो एवरी मंडे इज़ अ न्यू स्टार्ट. तो इस वजह से देयर इज़ नेवर अ बिगनिंग and there's never a start. You can really start anytime. Thank you so much guys for listening, and I'll see you guys next week with an amazing topic, with a good topic, and I hope you enjoyed this week's episode. Bye bye.